mentioning, we have brought down certain TDS and TCS provisions. We've increased the thresholds so that the deduction of tax starts at a higher threshold rather than a lower. In respect of sale of goods, the requirement of TCS, particularly under Section 206C 1H, is proposed to be done away with. We are completely removing it. Further, considering the difficulties which is faced by the taxpayer, we now propose to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. And that is a major step which will benefit the middle class, because in order to prove that the second house is also under their occupation, they do quite a few of paperwork and diligence has to be kept up. We are now saying you don't even need to do the paperwork. We take it as you stated for the second such occupied property. In order to streamline the process of transfer pricing, sir, and to provide an alternative to yearly examination, we have proposed that a scheme of determining arm's length price in international transaction for a block period of 3 years at a time. So this will be in line with the global best practices. So annually, people do not have to rush to prove what the transfer pricing commitments will be. Further, we've also, with a view to reducing the litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules have been expanded. Instead of having it narrow and expecting people to continuously come and prove that it is required for their business, we've widened it, and the safe harbor rules are therefore broader in favor of the assessee. Further, the presumptive taxation regime for non-residents is also now a lot more relaxed, particularly in the case of those businesses or resident companies which are operating in electronics manufacturing facilities, because electronics manufacturing demands supply of components in time, and those specific components will have to be brought in. If time lapses in their supply from the original equipment manufacturer, the production itself will suffer. So we've given them this particular presumptive tax regime so that the non-residents who participate in these services, particularly given to a resident company, can benefit. बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री को फाइनेंस बिल पर वो संसद में संबोधित करते हुए। आगे बढ़ते हैं और रिसर्च टीम को अपने साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ नेहा मौजूद हैं और आशीष है हमारे साथ। आशीष, पहले नेहा से शुरुआत करेंगे। नेहा, बताइए ट्रिगर्स आज आगे के लिए। पूजा, मैं आपको पहले स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट बता देती हूं। आपके पास स्टॉक्स इन न्यूज है, आपके पास ट्रिगर है। अच्छा, आज आशीष ट्रिगर्स बता रहे हैं। चलिए, तो फिर पहले आशीष से शुरुआत कर लेते हैं। आशीष, आप ट्रिगर्स बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो कल के इवेंट्स में आपके सामने रख देता हूँ। आरबीआई एंड गवर्नमेंट की मीटिंग है, जहां पर अगर आप देखें तो H1 FY26 का जो बोरोइंग प्लान है, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। MSTC यहाँ पर बोर्ड की बैठक है, इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा, और कुछ स्टॉक्स में आपको डिविडेंड का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। एक REC है, ₹3.60 का इंटरिम डिविडेंड है, और TVS मोटर्स यहाँ पर भी ₹10 का इंटरिम डिविडेंड है, तो इसकी स्टॉक प्राइस में एडजस्टमेंट है। ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो यूके का CPI और PPI, इसके आंकड़े यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करें गुरुवार के इवेंट्स की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो NSE के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, इनकी एक्सपायरी गुरुवार को होती थी। अब 3 अप्रैल की क्लोजिंग के बाद से ये बदल जाएगा, और अब एवरी मंडे यहाँ पर आपको एक्सपायरीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि सीरीज का आखिरी दिन है, तो जेके सीमेंट और LTTS ये